Hi guys, this is Arshada here and welcome back to my channel. So in today's video, I'm gonna share my hair care routine. So this video will be all about what all products I use for my hair and how I use it. I'll be sharing some of the tips also which I'm doing for quite some time and it has been great for my hair. So I'll be sharing that too with you guys. So if you're interested to know what all products I use and how I use it, then please keep on watching. Now firstly I'll be talking about the background of my hair, basically how my hair structure is, so that will be helpful for you guys to pick up products which I would recommend to you. So if you have the same hair structure, you can use these products as well. So firstly, my hair scalp is very oily. So after every 4th or 5th day of my wash, after washing my hair, every 4th or 5th day, my hair tends to become very oily, very greasy, and my hair ends would be completely dry. There will be no moisture in them. So this is the first problem I'm facing. The second thing I'll be talking about my hair structure is that my hair is not that voluminous. It's medium volume is there and my single hair strand is very thin. बहुत ही पतला है which makes it very easy to break. मतलब ये बीच में से कभी कभी टूट जाता है and I have problem of split ends, little bit of hair fall here and there, not a severe hair fall, and I have problem of premature gray hair too. But I would not be addressing all these problems in this video. So this video will be only about how I take care of my hair, how I make sure my hair be smooth and shiny. So this is what the video would be all about. So the first step of my hair care routine is oiling. I regularly oil my hair before wash. So I use this Parachute ka Advanced Aloe Vera Enriched Coconut Hair Oil. So why I use this oil? Because one thing, it's very lightweight oil, and the second thing, it doesn't have any smell. So remember one thing, that every time you should use a very lightweight oil which helps you to reduce your usage of shampoo. So if you use a very heavy oil ना, तो आपको बहुत ज़्यादा shampoo apply करना पड़ेगा to get it remove from your hair. तो इसके लिए हमेशा एक लाइट वेट ऑयल यूज़ करो. एंड द सेकेंड थिंग अबाउट दिस ऑयल इज इसमें स्मेल नहीं है, विच आई लाइक द मोस्ट. सो आई जनरली प्रेफर ऑयल विच डजंट हैव एनी स्मेल, डजंट हैव एनी ऑडर. तो ये मैं ऑयल यूज़ करती हूँ. सो आई यूज़ दिस ऑयल ओनली ऑन माई स्कैल्प एंड जो एंड्स होते हैं वहाँ पे मैं कंडीशनर लगाती हूँ. नाउ द रीज़न वाई एम यूजिंग दिस, बिकॉज माई हेयर के जो एंड्स है वहाँ पे बहुत ही ड्राइनेस है. दैट्स वाई टू रिमूव दैट ड्राइनेस और टू टीम डाउन दैट ड्राइनेस आई यूज़ अ कंडीशनर. सो यू कैन यूज़ एनी कंडीशनर यू वांट जो आप हेयर वॉश के टाइम में यूज़ करते हो. यू कैन यूज़ दैट कंडीशनर बिफोर हेयर वॉश ऑल्सो, बट आई यूज़ दिस. ये है लॉरियल का सीरीज एक्सपर्ट Cold Quinoa plus Protein Absolute Repair. This is a mask basically. I use this. So why I use this? Because it's a mask. तो generally ये बहुत ही ज़्यादा concentrated है and it helps to remove the dryness from your hair. And मैं oiling करती हूँ before 2 hours, मतलब 2 घंटे के लिए मैं oil रखती हूँ और this conditioner मैं अपने बालों में रखती हूँ. उसके बाद I just rinse it off. So I use this technique. What this technique will do is that it will condition your dry ends and जो oil है वो आपका scalp clean कर देगा. So this is one technique which is great if you have a dry end and a oily scalp. So you can use any conditioner if you want. ऐसा कुछ नहीं कि आपको यही product use कर सकते हैं. आप कोई भी conditioner use कर सकते हो जो भी आपका preference हो. Now people who don't have that much time in their hands and if you are getting bored of oiling your hair, आप ये मास्क यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ द मामा अर्थ आर्गन हेयर मास्क विथ आर्गन एंड एवोकाडो ऑयल एंड मिल्क प्रोटीन इनटू इट. सो दिस becomes a substitute for your ये जो प्रोसेस मैंने बताया था ऑयल और कंडीशनर का, ये एक सब्सिट्यूट बन जाता है. एंड ये जो आपको कैसे यूज़ करना है, आपको अपने बाल गीले करने हैं. सो यू हैव टू कीप दिस मास्क फॉर ओनली 20 to 15 minutes बिफोर वॉशिंग योर हेयर. सो आपको अपने बाल गीले करने हैं एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट फ्रॉम योर रूट्स टिल योर एंड्स. आप
पूरा अप्लाई कर सकते। सो ये हो गया ऑयलिंग प्रोसेस। नाउ so the second step is shampoo. So for that I use this Pantene का Pro V Advanced Hair Fall Solution. This is for total damage care shampoo. तो ये एक बहुत ही अच्छा शैम्पू है अगर आप बेसिकली बहुत ही अफोर्डेबल है द फर्स्ट थिंग, एंड यू गेट अ नाइस क्वांटिटी. यू गेट अराउंड 340 ml for 220 rupees only. Now what I like about this shampoo is that ये बहुत ही मेरे बालों को स्मूथ कर देता है आफ्टर शैम्पूइंग. इसमें केमिकल्स as per other brands is very less I think, because ये ज़्यादा डैमेज नहीं करता बालों को, and it makes my hair very soft and silky which I like the most, and the smell of this shampoo is also great. उसके साथ मैं इसका ही कंडीशनर यूज़ करती हूँ. This is the Pantene Pro V Advanced Hair Fall Solution, the same variant मैं इसके साथ यूज़ करती हूँ. सो मैं पहले जब ऑयलिंग करने के टाइम में आई यूज़ दिस लॉरियल का कंडीशनर एंड देन आई यूज़ दिस कंडीशनर. सो यू डोंट हैव टू यूज़ अ लॉट ऑफ कंडीशनर आफ्टर शैम्पूइंग योर हेयर. मतलब शैम्पू के बाद आपको ज़्यादा कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव कंडीशनर योर हेयर. एंड वन टिप आई वॉन्ट टू शेयर हियर इज़ दैट वट एवर शैम्पू यू यूज़ इट हैज़ केमिकल्स इन टू इट. तो आपको क्या करना है, आपको शैम्पू को डाइल्यूट करना है. नेवर यूज़ द प्रोडक्ट डायरेक्टली ऑन योर हेयर. सो लॉट ऑफ पीपल हैव द हैबिट ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली. आप हाथ में लोगे और डायरेक्टली आप बालों में उसको अप्लाई करोगे. यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट. आपको उसको डाइल्यूट करना है. सो व्हाट यू डू, यू टेक एनी बाउल एंड उसमें शैम्पू पोर करो और उसमें ट्वाइस और 3 टाइम्स आप उसमें पानी डालो. तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाता है केमिकल्स का, एंड वो डाइल्यूट हो जाएगा. तो अच्छे से आप बालों में अप्लाई भी कर सकते हो और ज़्यादा लेदर अप होता है, बेसिकली फोमिंग ज़्यादा होता है. सो दिस इज़ द वे यू हैव टू यूज़ इट. एंड मेक श्योर यू कोम योर हेयर. आप ऑयलिंग के बाद हमेशा आपके बाल कोम करो एंड देन ओनली गो फॉर अ शैम्पू, सो दैट विल मेक श्योर यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ हेयर फॉल. कंडीशनर शुड बी अप्लाइड ओनली फ्रॉम योर मिड लेंथ टिल योर एंड्स. आपको स्कैल्प में कंडीशनर नहीं लगाना है. सो वंस यू आर डन विथ योर शैम्पू एंड कंडीशनर, आपको हमेशा बाल एयर ड्राई करने हैं. अवॉइड यूजिंग एनी हेयर ड्रायर और एनी हीटिंग मशीन. एयर ड्राई करोगे तो बहुत ही अच्छा है, विच विल मेक श्योर दैट योर हेयर विल गेट अ टाइम टू ब्रीथ. Now what you have to do once you are hair drying और थोड़े बहुत सूख गए हैं बाल और थोड़े गीले हैं अंदर से, you can use any hair serum if you want. So if you have a problem of frizziness और अगर आपको शाइन चाहिए बालों में, तो आप कोई भी हेयर सीरम यूज़ कर सकते हो. What I would recommend is that this is the body care hair serum frizz control super shine. This is paraben free. तो मैं ये सीरम यूज़ करती हूँ वेंस माई हेयर इज़ लिटिल बिट डैम्प, मतलब थोड़े गीले और थोड़े सूखे हैं. सो आई पुट इट ऑन माई एंड्स जहाँ पे भी मुझे फ्रीजीनेस बहुत है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीजीनेस बहुत है, सो आई अप्लाई इट. एंड इससे फ्रीजीनेस थोड़ा टीम डाउन होता है, पूरा निकल नहीं जाता बट कम हो जाता है. सो इफ़ यू वॉन्ट सम शाइन, आई ऑल्सो यूज समटाइम्स दिस स्ट्रीक्स का हेयर सीरम. दिस इज़ द walnut oil वाला hair polishing and smoothing serum for soft and silky hair. So if you want some shine or if you want some softness, you can use this hair serum too. ये भी एक अच्छा काम करता है. So now I also use shampoos which is on the higher end. So I'm talking about the Series Expert Pro Keratin Liss Unlimited shampoo. Now it's been a month I'm using this and I can review it properly now. So ये bottle almost ख़त्म होने को आया है and I think it's a decent product. But what I was expecting from this product वो उसने satisfy नहीं किया है. I thought it will provide keratin, it will make my hair frizz free and बहुत सारा कुछ मैंने एक्सपेक्ट किया था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है. एंड वन थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट इज, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो शैम्पू है, इट डजंट लैदर अप. सो व्हेन यू ऑयल योर हेयर प्रॉपर्ली एंड यू वांट टू वॉश इट फ्रॉम दिस शैम्पू, नेवर डू इट, बिकॉज ये प्रोडक्ट लैदर अप नहीं होता है एंड ये आपका ऑयल बालों से नहीं निकालेगा. Now talking about this mask, I think I would highly recommend getting this mask. ये जो मैंने आपको टिप बोला था कि for your ends you can use a conditioner or you can use this mask also, because this mask is highly concentrated, so it help your ends to get more conditioner, get more moisture. So this is the Gold Quinoa Protein Absolute Repair. ये mask है Series Expert, again L'Oreal Paris.
I think highly recommend this mask. ये अच्छा खासा product है for 780 rupees and I will highly recommend getting this product and not the shampoo. So yeah, so this is what my hair care routine is. I don't use a lot of products, very minimum products I use. And yeah, so if you found this video informative and आपको अगर ये video पसंद आया, then please make sure you hit that like button and also make sure you subscribe to my channel and comment down below what all videos or products के review आप देखना चाहते हैं. And yeah, I'll see you guys in my next one. Bye bye.